Hello friends, hope you all are fine and doing well. Stay home, stay safe. Today we'll discuss very important class of the drugs acting on the ANS, autonomic nervous system. In that we'll discuss parasympathomimitics and parasympatholytics. In this lecture we'll discuss parasympathomimitics. Already we discussed the divisions of the nervous system. We know that nervous system is divided into the CNS and PNS, central nervous system and peripheral nervous system. The brain and spinal cord, they fall under the central nervous system. All the tissues, nervous tissues which are present in brain and spinal cord, they are under central nervous system. The tissues, nervous tissues and the nerves which are present outside the brain and spinal cord, they fall under the peripheral nervous system. Peripheral nervous system is further classified as autonomic nervous system and somatic nervous system, which consists of the somatic nervous system consists of the afferent nerves and the efferent nerves. We know that sensory nerves and the motor nerves. Autonomic nervous system is further classified as sympathetic and parasympathetic. So sympathetic and parasympathetic nervous system, we already discussed what are the differences between them. Now the drugs which are acting on the sympathetic and parasympathetic nervous system, they are only the parasympathomimitics and sympathomimitics. The comparison already we discussed between the sympathetic and parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system, it performs maintenance activities and conserve body energy, that is rest and digest. So acetylcholine is the main neurotransmitter in parasympathetic nervous system, which is both pre and post ganglionic neurotransmitter, which is released at the cholinergic synapses and neuroeffector junctions, mediates its pharmacological action through cholinergic receptors. We know that different cholinergic receptors, muscarinic and nicotinic receptors. So parasympathomimetic drugs are also known as the cholinergic, क्योंकि वहां पर क्या है, एसिटाइल कोलिन है, इसीलिए एसिटाइल कोलिन है वहां पर, इसीलिए उसको कोलिनर्जिक भी कहते हैं. सो कोलिनर्जिक्स आर एजेंट्स व्हिच मिमिक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन. मिमिक करते हैं यानी मिमिक्री है ना, जैसे कॉपी करते हैं. तो जो इफेक्ट एसिटाइल कोलिन के है वैसे ही इफेक्ट ये ड्रग प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स कहते हैं या फिर कोलिनर्जिक कहते हैं. पैरासिम्पैथोलाइटिक जो होते हैं, they antagonizes the effect of parasympathetic stimulation. So जो एसिटाइलकोलिन के जो इफेक्ट है उसके इफेक्ट को ये अपोज करेंगे, उसके उल्टा इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे या फिर उसके उस इफेक्ट को रोकेंगे, इसीलिए इसको पैरासिम्पैथोलाइटिक कहते हैं या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं. So thus parasympathomimetics and parasympatholytics already we discussed. So a parasympathomimetic drug, sometimes called as cholinomimetic drug or the cholinergic drug, is a substance that stimulates the parasympathetic nervous system. Thus chemicals are also called as cholinergic drug because acetylcholine is the neurotransmitter used by this parasympathetic nervous system. So the classification of the parasympathomimetics, so direct acting and indirectly acting. So those are the directly acting drugs, cholinesters. Example is the acetylcholine, carbachol, methacol, bethanacol. Then cholinomimetics agonist, cholinomimetic agonist, मेनली मस्करिनिक अगोनिस्ट है ना. मैंने कहा आपसे दो रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्करिनिक रिसेप्टर. सो जो मस्करिन रिसेप्टर के ऊपर अगोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, which are obtained from the natural alkaloids, they are muscarine, pilocarpine, एरेकोलिन. देन सिंथेटिक अल्कोलाइड्स, ये नेचुरल अल्कोलाइड्स है, ये सिंथेटिक अल्कोलाइड्स ऑक्साट्रामोरिन है ना. देन सिलेक्टिव M3 अगोनिस्ट है ना, सिलेक्टिव M3 अगोनिस्ट यानी मस्करिनिक M1, M2, M3 जो M3 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे और अगोनिस्ट है वह है सेविमेलिन. देन मेनली निकोटिनिक अगोनिस्ट जो निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे. सो नेचुरल अल्कोलाइड्स निकोटिन, then lobeline, then synthetic alkaloids, those are the synthetic alkaloids, dimethyl phenyl piperazine, then tertiary alkaloids, then quaternary amines, in which muscarine is the drug, then nicotine, pilocarpine. So those are the drugs which are directly acting, directly acting cholinomimetics. Those are the indirectly acting, reversible anticholinesterases. Already we discussed how does cholinesterase is responsible for the deactivation of the acetylcholine. So reversible anticholinesterases, अगर anticholinesterase को जो ड्रग cholinesterase एंजाइम को जो ड्रग ब्लॉक करते हैं उसे कहते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेस. जब एंटीकोलिनेस्ट्रेस ये ड्रग क्या करेंगे, कोलिनेस्ट्रेस को ब्लॉक कर देंगे, ये एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा. एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एसिटाइलकोलिन वहां पर ज्यादा टाइम तक रहेगा और उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. तो ये कौन से है, रिवर्सिबल है, यानी बाद में कुछ देर के बाद, मिनट्स और कुछ आवर्स के बाद जो है
ये कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो कौन से ड्रग्स है ये? कार्बामेट्स है, टर्शरी अमाइंस, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फाइसोस्टिग्मिन, देन क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड्स, so neostigmine or pyridostigmine those are the example, then alcohols, then miscellaneous टैक्रीन, डोनिपेजिल एक्सेट्रा, ये हमने डिस्कस किए थे अल्जाइमर के अंदर, है ना। then irreversible anticholinestrases, the irreversible anticholinestrases are the known as the organophosphorus compound। पूछता है एग्जाम के अंदर organophosphorus poisoning, give the treatment of organophosphorus poisoning, वो इंपॉर्टेंट है ये। सो इरिवर्सिबल है, उसके अंदर एग्जांपल है विच आर थेरापेटिकली यूजफुल, जैसे इकोथियोपेट ये एग्जांपल है जो थेरापेटिकली यूजफुल है। वॉर गैसेज, सैरिन, ट्यूबान, सोमान, वॉर गैसेज मतलब देखो जो केमिकल वेपन्स है ना, ये नर्व गैसेस भी कहते हैं इसको। ये क्या करते हैं ये गैसेस, ये डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं आपके रिस्पिरेटरी मसल्स को, पैरालिसिस करते हैं रिस्पिरेटरी मसल्स को, जिससे सफोकेशन होगा और डेथ हो जाएगा अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दिए तो। वैसे भी न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे फंक्शन जो है ये ब्लॉक कर देता है वॉर गैसेस। उसके बाद में इंसेक्टिसाइड्स है, जो जनरली हमारे जो हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं घर के अंदर, जो अगरबत्ती होती है, मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर होता है ये पैराथियोन, है ना, 10 डाइस्पोप्रिन, ये सब compounds है which are known as the organophosphorus compounds। We just overview the neurotransmission at cholinergic neurons। This is the neurotransmission। We know that choline and acetyl-CoA they form the acetylcholine, they are packed into the synapse, है ना, uptaking the storage synaptic vesicle, है ना, storage in the vesicle, then release to the calcium will come and then causes the release of this synaptic vesicle, and release of neurotransmitter, it will come bind to the receptor, intracellular receptor। Here this is the enzyme which is present, cholinesterase enzyme, है ना, cholinesterase enzyme is present here which causes the degradation of acetylcholine। So this choline and acetate दो पार्ट के अंदर इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, it will be recycled and it will be get reuptake, है ना। So this is the neurotransmission है cholinergic neurotransmission। This is the acetylcholine neurotransmitter, then dendrite bind। See here, this is the breakdown acetylcholinesterase enzyme will causes the breakdown of the acetylcholine, so effects of acetylcholine will be terminated। तो ये acetylcholinesterase है, ये न्यूरोनल जंक्शन में प्रेजेंट रहता है। एक और एक एंजाइम है जो है pseudocholinesterase, जैसे pseudocholinesterase जो है इसको ब्यूटीर कोलिनेस्ट्रेज भी कहते हैं, जो जनरली प्रेजेंट होता है आपके प्लाज्मा में और लिवर में, which causes the hydrolysis of SEH in the circulation। so ये फार्माकोजेनेटिक इंपॉर्टेंस है उसका pseudocholinesterase का। So here we discuss the classification of parasympathetic directly acting और indirectly acting। indirectly क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये देखो ये डायरेक्टली एक्टिंग जो है तो डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन है ना, जो अगोनिस्ट डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे, है ना, मस्करेनिक निकोटीन के ऊपर। ये इनडायरेक्टली एक्टिंग इसलिए क्योंकि जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है जो डिग्रेडेशन कर रहा था एसिटाइलकोलिन का, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद या ब्लॉक करने की वजह से एसिटाइलकोलिन का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, तो इनडायरेक्टली बढ़ेगा, है ना, इसलिए उसको इनडायरेक्टली एक्टिंग कहते हैं। Now what is the pharmacokinetic of this drug? Acetylcholine and other cholinesters have permanently charged quaternary ammonium group in their structure, so all are hydrolyzed in GIT। तो जितने भी कंपाउंड है ये सब कहाँ हाइड्रोलाइज होते हैं? GIT में, इसलिए इसको ओरली नहीं दे सकते। इसलिए पूछेंगे आपको why acetylcholine is not used, ये रीजन है उसका, ठीक है। cholinesters are poorly absorbed and poorly distributed in the CNS। methacholine is resistant to the hydrolysis by cholinesterase। carbamic acid esters, carbachol and bithanol most resistant, longer duration of action, they all are excretion or excreted by the kidneys। now what is the mechanism of action, ये कैसे act करते हैं? so all acts on the muscarinic and nicotine receptor। so muscarinic receptor are generally G protein coupled receptor and nicotine receptors are the ion channel linked receptor। so direct acting जो है agonist है, bind to the cholinergic receptor and causing its stimulation, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इफेक्ट आप एसिटाइलकोलिन का होता है वही सेफ्टी प्रोड्यूस करेंगे। और इनडायरेक्ट एक्टिंग इनहिबिट द एंजाइम कोलिनेस्ट्रेज, रिजल्ट मोर एसिएच इज अवेलेबल एट द रिसेप्टर्स। सो रिवर्सिबल जो है बाइंड टू द कोलिनेस्ट्रेज फॉर अ पीरियड ऑफ मिनट टू आवर्स, बट इरिवर्सिबल बाइंड्स टू द कोलिनेस्ट्रेज एंड फॉर्म अ परमानेंट कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉडी मस्ट मेक द न्यू कोलिनेस्ट्रेज, तो वो कोलिनेस्ट्रेज कुछ काम का नहीं रहेगा। सो इरिवर्सिबल टाइप के जो है आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस आते हैं। तो ये देखो ये दिस इज द मैकेनिज्म, है ना, जो हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं उसी तरह का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, व्हिच कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर सोर्सेस, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंड द अल्टरेशन इन द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम डिपेंडेंट एंजाइम प्रोड्यूसेस द इफेक्ट।
Now what are the pharmacological action? So as I told you, they act on the different muscarinic receptor. So those are the receptor, different glands receptor, how they produce the effect. Increased secretion causes the salivation, sweating, lacrimation. On eye, it causes the blurring of near vision, increased aqueous outflow. Then M3 and M2, they cause the abdominal cramps, evacuation of bowels. Then M3, constriction of bronchial muscles, bronchospasm, dyspnea, asthmatic attack. है ना, हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है देखो. M2 रिसेप्टर्स है, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ एस नोड, ब्रैडीकार्डिया, है ना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट को रोक देगा, ब्रैडीकार्डिया कम करना, हार्ट रेट कम कर देगा. देन फॉल इन ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या करेगा, फॉल इन ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, फ्लशिंग. It causes the release of nitric oxide, dilation of cavernous sinus, which causes the erection of penis, sexual organs. Then nicotinic action of the cholinergic drugs acts on the autonomic ganglia, NN receptor and NM receptor. So NN receptor stimulation of sympathetic and parasympathetic ganglia at higher doses. On excretal muscle, it causes the ionophoric application of ACS to muscle, end plate, contraction of fibers. Intra-arterial injection causes the twitching and fasciculation, है ना, muscles को break करेगा. Now what are the clinical indications of these drugs? They act on the gastrointestinal and genitourinary system. So urecholine, GI smooth muscle, causes the post-operative abdominal distension, paralytic ileus, इन चीजों में यूज होगा. Urinary bladder stimulants, post-operative postpartum urinary retention. Carbachol not used due to the more prominent nicotinic receptor activation. Methacholine used for the diagnostic purpose. Ophthalmic use of these cholinomimetics, acetylcholine and carbachol may be used for intraocular uses as a meiotic in surgery. Carbachol may be used in the treatment of glaucoma. Pilocarpine is used in management of glaucoma and has become the standard initial drug for treating the open angle form. Then atropine and pilocarpine, iris lens adhesion में use करते हैं. What are the adverse effect? Overstimulation of muscarinic and nicotinic receptor की वजह से ये एडवर्स इफेक्ट होंगे. मियोसिस, सलाइवेशन, स्वेटिंग, है ना, माइस्थीनिया ग्रेविस, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, सीएनएस इफेक्ट एट हाई डोसेस. Those are the adverse effect of the cholinomimetics or parasympathomimetic drugs. So anticholinesterase which inhibit the cholinesterase enzyme, protect acetylcholine hydrolysis, produce the cholinergic effect and potentiate the acetylcholine. Those are the reversible, irreversible. Already हम discuss किए. What are the uses? उसका indications क्या है? एक तो यूज होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में. It is the autoimmune disease myasthenia gravis which is characterized by destruction of nicotinic receptor on skeletal muscle, which results in weakness and reduces the capability of contraction of the muscle. So what happens? This anticholinesterase by inhibiting breakdown of acetylcholine potentiate the action of acetylcholine and improve the contraction of skeletal muscle. तो इसके अंदर जो है यूज किया जाता है नियोस्टिकमिन, है ना. तो माइस्थीनिया ग्रेविस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ऑटोइम्यून डिसीज है, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होता है निकोटिनिक रिसेप्टर का. स्केलेटल मसल प्रॉपर्ली जो है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे. और हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर. तो यहाँ पर नियोस्टिकमिन यूज होता है टू इंप्रूव द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल. दूसरा इसका यूज है ग्लाउकोमा के अंदर, प्रेफर्ड ड्रग है उसके अंदर फाइसोस्टिकमिन, क्योंकि वहां पर एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट सर्कुलर मसल ऑफ आइरिस एंड सिलियरी मसल एंड रिड्यूसेस द इंट्राओक्युलर टेंशन. दूसरा उसका यूज है ऑटोनिक इंटेस्टाइन, और अल्जाइमर डिसीज के अंदर हम यूज ऑलरेडी डिस्कस किए, है ना. और एट्रोपिन पॉइजनिंग जो होती है, एट्रोपिन ब्लॉक्स द कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. सो एंटीकोलिनेस्टेरेस बाय पोटेंशिएटिंग एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन अपोजेस द एक्शन ऑफ एट्रोपिन इन एट्रोपिन ओवरडोज. ठीक है. सो ओवरडोज ऑफ मसल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, उसके अंदर भी जो है तो ये यूज किया जाते हैं ये ड्रग, है ना. तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है ये ड्रग्स के, एंटीकोलिनेस्टेरेस के? Adverse effect of these agents are all extension of pharmacological actions. Example, unpredictable cardiovascular effects like bradycardia, arrhythmias, bronchospasm, laryngospasm, spasm of respiratory muscle, blurring of vision, abdominal cramps, excitement and ataxia. ये सब क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स है एंटीकोलिनेस्टेरेस के. मतलब ये सारे सिम्टम्स हो गए ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के. तो उसके ट्रीटमेंट की तरह सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी एंजाइम जो आपका कोलिनेस्टेरेस एंजाइम जो है जो ब्लॉक हो गया है रिवर्सिबली, उसको क्या करो, रीजनरेट करो. उसके लिए एक ड्रग है जो यूज की जाती है, पैरालिडॉक्सिन, है ना. पैरालिडॉक्सिन दिया जाता है. इट एडमिनिस्टर्ड 4 hourly. इट रीएक्टिवेट्स द एंजाइम कोलिनेस्टेरेट दैट इज इनएक्टिवेटेड बाय द एंटीकोलिनेस्टेरेस. ये उसका मैनेजमेंट है ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. तो प्लीज गो थ्रू इट. इट इज ऑल अबाउट द पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स. थैंक यू.